and today I'm going to make bread idli. For making bread idli, I need some boiled potatoes, some salt, some red chili powder, chaat masala, onion and green chili. So let's get started. So for this I need a bowl and I'll put potatoes in it. And then we need to mash it. You can use your hand also. So I have mashed the potatoes and then I'll put some salt to it. You can even put according to your taste. And then some red chili powder. If you like spicy, you can add more. If you don't, add little. Now we will put chaat masala. If you don't have chaat masala, also you can put garam masala to it. And now I will put onions and some green chilies. And then you need to mix it properly. For your potatoes mixed properly, and now we need to make aloo tikki for it. So yeah, potatoes we need to make small tikkis of it. Make sure your hand should be oily. So I have taken some oil and make aloo tikkis. So you make sure you do it nicely. And my first aloo tikki is ready here. I'll make more. So yeah. So guys, my aloo tikki is ready. And now we need a pan with little bit oil, and that should be hot so we can fry our tikkis. So guys, my tawa is ready. I have put some oil and the flame should be in medium. And now we are going to fry these tikkis. Guys, my tikkis are ready, and make sure your flame should be in slow or medium. So yeah. And I have prepared this curd. हमको इसमें छोंक लगाना है, तो छोंक के लिए मैं आपको दिखा नहीं पाई. हमें चाहिए हल्दी, नमक एंड राई. हाँ, और इसको दही को आप घोट के आप इसमें डालिए तो ये हो जाएगा. और इसमें मैंने 4 ब्रेड्स लिया है. एंड अब मैं इसको एक कटोरी से सर्कुलर शेप में काटूंगी. इसका जो साइज है आप साइड में रख सकते हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा. ये दही हमने जो मतलब बनाया था, अब हम इसे डिप करेंगे. तो मैं टिक्की को साइड कर देते हैं. आप ये अच्छे से कीजिएगा बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो ये कुछ ऐसा होगा और आप इसे प्लेट में रख दीजिएगा. The last one. ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए आपका ब्रेड, नहीं तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं. So yes, I have done this and now अभी हमें पैन चाहिए, थोड़ा सा ऑयल जिसमें हम ये बना सकते हैं. Guys, you need hot pan and your flame should be in low, and first we will put tikki and then this. So guys, we need to place it like this and this, and now we need to put cover on it, and now it's being ready. So guys, my bread idli is ready, and for the decoration you need to wait till the end.
So till then, bye bye. जो हमारा ब्रेड इडली है वो तो एकदम तैयार हो गया है, बट अभी गर्मी का सीजन है तो कुछ तो रिफ्रेशिंग चाहिए होगा इतना यम्मी खाना के साथ. सो मैं बनाने वाली हूँ वाटरमेलन मोहितो. तो मैंने सबसे पहले आइस ले लिया है, फिर हमें नींबू का रस चाहिए होगा. मेक श्योर आप बीज निकाल दें. 1 लेमन तो चाहिए. थोड़ा सा और नींबू का रस डालेंगे. ओके, नींबू का रस डालने के बाद हम एक मिंट्स डालेंगे एंड अ पीस ऑफ लेमन एंड वाटरमेलन जूस. Refreshing. And now I'll put little pieces of watermelon. So guys, my watermelon mojito and my bread is ready. It looks really tempting, and yeah. So guys, my bread is ready and my watermelon mojito. So guys, I'll cut and show you. So yeah guys, I've cut a small piece and it shows the stuffing of potato. Yeah, so आप कोई भी घर में आए, you can make this, and this आप ये normally भी बना सकते हो because it's a very refreshing drink, especially for summers. And yeah guys, thank you for watching this video and do try this recipe.